Indira Awas Yojana. It is a scheme under the Rural Development Ministry. But 15%, 4,57,000 houses were earmarked in the 2012-13 target under Indira Awas Yojana. 4,57,000 was the thing, and that entire expenditure is for minorities. And similarly, Ajivika is a program for the women's employment opportunity. That is, the total budget is 3,000 crores. Out of that, 450 crores is earmarked for the minorities. Sarva Shiksha Abhiyan, the 26,000 crores budget, 15% of it is earmarked for minorities. So these are all, you see, that is why it is always, if you take our ministry mandate, I would like once again to tell our ministry mandate is not to run this two scheme of MSDP and scholarship program. Our ministry's mandate is to effectively monitor 15-point program. That is why I said our secretary every quarterly entire nodal officers case bulakar we review entire this thing. Then the Prime Minister reviews. Then the Cabinet Secretary reviews. So it is that also meant for minority. For example, banking. That is credit flow is one of the recommendations of the Sachar committee. In credit flow, you take the credit before Sachar committee, the total credit, and today's total credit. It was 8% when this was 15% was fixed. Now in the course of 6 years, for 5 years, we have reached 14.6% or something. In employment also, the monitoring is going on. I concede that the speed may be slow, but we are here to see that the programs reaches the people. मुस्लिम बच्चों का पहली क्लास के बाद 70% ड्रॉप है. इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? आप उठा के रिकॉर्ड देखिए, 70% मुस्लिम बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं पहली के बाद. तो आखिर ये ड्रॉप क्यों? देखिए 70 नहीं, मैं बताऊंगा. मैं कर्नाटक में माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था, वहां इकोनॉमिक सर्वे किया हूं मैं, यानी सेंसस किया हूं. At 7th standard level, the dropout at that time, it was somewhere in 90s, I am telling you, the dropout is 97% at 7th standard level. So that 97. Is the magnitude of the problem. The magnitude of the problem. But now, the step we have taken is in right direction. I am not saying that by this we are going to achieve the step in right direction. Education today, a child from the mother's womb up to PhD, he can get educated after the implementation of Sachar committee. It was not there before that. But not all. That is because our scholarship are still not demand driven. We are working for making this scholarship demand driven. That is one of the initiatives we are taking. I hope that once it comes, that nobody will be drop out. Sir, I have a question regarding linguistic minorities. Yes. अभी आके देश में कई सारे ऐसे लिंग्विस्टिक ग्रुप है जिनको वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए. तो ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं? और जैसे कि दार्जिलिंग इलाके में जैसे नेपाली लैंग्वेज की माइनॉरिटी वो भी डिमांड करे, इसके ऊपर सरकार का क्या रवैया है? देखिए, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. वी हैव ए कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड दे take note of all these complaints of the linguistic minorities. So they are presenting reports. Now that we have also received complaints, and only thing is the state governments have to implement. That is not, because unlike religious minorities which are national, the linguistic minorities is state specific. So we have to take steps to, in fact, recently the Commissioner for Linguistic Minorities has requested all the state chief ministers to implement and look into this thing, and we are looking into these grievances. Yeah.
Just to 1 minute. yeah. No, I want to supplement his questions. We have minority in Mizoram. They are called the Gorkhas. Constitutionally, they are minority in India. There they claim they want the status of OBC. They are demanding the status of OBC. So who is the authority? See, the state, the Gorkhas, if they say they are the religious minorities, because now, as far as our ministry and the National Commission is concerned, only 5 religious minorities have been declared as national religious minorities. The rest, according to Supreme Court, it is the state specific. In each state, they will have to declare whether a particular religious minority is a minority or not. So, and then there are cases, you are right, that even the religious minorities in the northeastern state, they are not taking our scheme because they are all, some of them are tribals. They prefer to take schemes, benefit under the tribal scheme rather than taking in our scheme. अभी बताया मैं और उनमें बहुत से लोगों की रिहाई हुई मुस्लिम लड़कों की, जैसे आपके भी स्टेट में एक मिर्जा एजाज, वो आपके साइंटिस्ट है, वो रिसर्च फेलो कर रहा था, उसको हुआ कि वो मुल्क से गद्दारी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, लेकिन अभी उसकी रिहाई विदाउट एनी, लेकिन उस चाह रहा कि हम वहीं फिर काम करें, लेकिन उसको वहां सर्विस नहीं दी जा रही। आप मिनिस्ट्री क्या कर रही है इस सिलसिले में, क्या स्टेप उठा रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आया है, तो मैं उसके जवाब नहीं दे सकता क्या स्टेप, अगर आए तो वो मैं देखता हूँ। दूसरा जो है, ये सवाल होम मिनिस्टर साहब ने अपने लेटर में ये भी कहा कि रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू दो एक्वेटेड, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट ईच केस विल बी नीडेड टू बी एग्जामिन्ड इंडिविजुअली, बिकॉज देयर कैन नॉट बी ए थिंग। सो, और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज फॉर यूजुअली फॉर द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट ऑन दैट, बिकॉज अगर कंपनसेशन देना है या उनको नौकरी देना, ही हैज गॉट ए राइट टू गो टू द कोर्ट। उन्होंने भी कहा कि दे हैव गॉट द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड टेक दिस थिंग। ये तो दिल्ली की 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज का जो उसमें लीगल ओपिनियन हासिल करना था अटॉर्नी जनरल की, वो ओपिनियन अब आ गई है और वी आर टेकिंग स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लीगल एडवाइस। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं। सर, आई हैव वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज। सर, 2003 साल में केंद्र ने सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया था। कितना क्या दर्जा? लिम्बू और तामांग्स को शेड्यूल ट्राइब। अभी तक उनको सीट नहीं मिला है, तो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से क्या इंटरवीन कर सकते हैं? नहीं, ये हमारी मिनिस्ट्री को नहीं आएगा, SC/ST का, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को का ये सब्जेक्ट है। आप उनसे खत लिखें तो कुछ। With that, friends, we come to the end of today's session. I'd like to thank the Honourable Minister, the Secretary and other senior officers for being with us, and thank you all for participating in a very lively discussion. I'd also like to announce that tomorrow the session will begin slightly late, so we will all convene here at 11 a.m. Thank you.